Good morning students. Myself Saita Chaudhary, TGT science teacher from St. Joseph Public School Tonk. Students, we were doing chapter number 4 of science, which is materials, metals and non-metals, and we started the topic chemical reactions of metals and non-metals. And in that part, in previous video, we got to know how metals and non-metals, they react with oxygen to form metal oxides and non-metal oxides respectively. We also learned, students, that the reaction of metals with the oxygen or with the other substances, that depends upon one series. That series is called as reactivity series of the metals. So the metals which are lying at the top of the reactivity series, they react vigorously with any substance. The metals which present in the middle of the reactivity series, they show moderate reactions. And the metals which are present at the bottom of the reactivity series, they are generally least reactive. Generally वो ज़्यादा reaction show नहीं करते हैं. So in continuation of that part, let's study some more chemical reactions of metals and non-metals. So in today's video, we are going to study in detail chemical reactions of metals and non-metals with water. ऑक्सीजन के साथ बात कर चुके हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो मेटल ऑक्साइड्स और नॉन मेटल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं. आज सीखते हैं ये वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे. So the basic key concept which you need to understand that is that whenever the metals they react with the water, first of all they form the same product as was formed in the reaction of metal with oxygen. वहाँ पे किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था? That was the metal oxide. So यहाँ पे भी जब ये मेटल रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, तो first it is going to make the metal oxide. And within few seconds that metal oxide gets converted into the final product, and the final product is metal hydroxide plus hydrogen gas is evolved. Friends, you also need to understand how we can identify, because we know that oxygen gas, hydrogen gas, carbon dioxide gas, these are colorless and odorless gases. तो जो हमें दिखाई भी नहीं दे रही, जिनको हम ऑर्डर भी नहीं कर सकते हैं जिनको, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस हो रही है? For it, there is a simple test which can be conducted to identify or to confirm the presence of hydrogen gas. अगर कहीं से गैस प्रोड्यूस हो रही है and if we bring a burning matchstick nearby that gas, so if that gas catches fire and bursts with the pop sound, अगर वो गैस जो है फायर को कैच कर लेती है और पॉप साउंड के साथ खुद बर्स्ट हो जाती है, then that is the clear indication of presence of hydrogen gas. Because hydrogen is a gas which catches fire and bursts with the pop sound. Again, the reaction of these metals with the water, that depends on this reactivity series. The metals which are present at the top of the reactivity series वो बहुत fast reaction show करेंगे. Middle one are going to show moderate reactions, and जो बिल्कुल bottom पे present हैं, they will show least reactions. Let's take few examples how they react with the water. So we are starting with the first topmost metal of the reactivity series, that is potassium. So let's see, friends, how potassium reacts with water. So for that I am showing the symbol of potassium, that is capital K. Formula of water which is H2O. And यहाँ पे जो metal hydroxide बनता है, friend, that is KOH. Name, chemical name is potassium hydroxide, plus which gas will be produced? Hydrogen gas will be produced. How the sodium reacts with the water? Let's see. When the sodium reacts with the water, it will again form sodium hydroxide, and formula of sodium is Na. Sodium का symbol Na है और hydroxide का symbol होता है OH. So it is sodium hydroxide plus evolution of hydrogen gas. So as potassium and sodium, they are highly reactive metal, बिल्कुल reactivity series में top पे exist कर रहे हैं.
तो वो इतनी ज्यादा फास्ट रिएक्शन शो करते हैं वाटर के साथ दैट दे स्टार्ट रिएक्टिंग विद कोल्ड वाटर। अगर पानी बहुत चिल्ड होगा तो उसके साथ भी ये रिएक्शन कर जाते हैं। एंड रिएक्शन इतनी फास्ट होती है, इतनी विग्रस रिएक्शन होती है दैट अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन दीज रिएक्शन। तो एक छोटा सा मैजिक, कई बार हम जाते हैं कहीं पे तो शो करते हैं ना मैजिक के अंदर कि दे आर हैविंग सम कंटेनर एंड फिल्ड विद वाटर एंड उसमें वो कुछ थ्रो करते हैं, दे शो कि देखो वहां पे आग लग जाती है। सो व्हाट दैट इज बेसिकली, वो सोडियम और पोटेशियम के क्रिस्टल्स को अगर वाटर में थ्रो करेंगे तो वहां पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, साथ में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बिकॉज ऑफ दिस हाईली प्रोड्यूस्ड हीट, दिस हाइड्रोजन गैस it catches fire and start burning with a pop sound। वो आग पकड़ लेता है, पॉप साउंड के साथ वो बर्स्ट होना स्टार्ट हो जाता है। That is the reason students, these potassium and sodium, we also learned that they are highly reactive with oxygen gas of the atmosphere, so they cannot be kept in open containers, they cannot be kept in immersed in water also, क्योंकि वाटर के साथ ही बहुत हाई रिएक्शन वो शो कर रहे हैं। Then how they are stored? They are generally stored in the containers filled with kerosene। केरोसिन के अंदर उनको immersed फॉर्म के अंदर हम यूज करते हैं। Let's see some more examples how calcium and magnesium they react with water. So when calcium formula is Ca, it reacts with the water. Water is formula is H2O. What it is going to make? It is going to make metal hydroxide। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH whole twice plus hydrogen gas is also produced over here। Do you know one more interesting thing about this calcium when it reacts with the water? If we are having a container filled with water और उसमें अगर हमने कैल्शियम के कुछ क्रिस्टल्स को थ्रो किया, so what will happen? The hydrogen gas produced over here in the form of bubbles, that hydrogen gas gets stick to the surface of calcium। ये हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं वो कैल्शियम के सरफेस के ऊपर आके स्टिक हो जाते हैं एंड ऑन डूइंग सो द कैल्शियम मेटल इट स्टार्ट शोइंग द फास्ट मोशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो वाटर के सरफेस के ऊपर बहुत हाई स्पीड से ये मोशन करता हुआ हमें दिखाई देता है until it completely gets reduced। जैसे वो रिएक्शन करेगा उसका साइज रिड्यूस होता जाएगा और जब तक अगर हम बहुत बड़ा क्रिस्टल यूज करेंगे कैल्शियम का तो वो काफी देर तक हमें मोशन शो करेगा वाटर के सरफेस के ऊपर। बट इफ वी आर टेकिंग अ स्मॉल वन क्रिस्टल ऑफ द कैल्शियम तो वो जल्दी से रिएक्शन करके बिल्कुल फिनिश हो जाता है। बट दिस रिएक्शन इज नॉट सो हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत इसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होती है। इन द सेम वे इफ वी टॉक अबाउट द मैग्नीशियम, तो व्हेन द मैग्नीशियम इट रिएक्ट्स विद द वाटर, सो द मैग्नीशियम it generally doesn't react with the cold water। ये बहुत ज्यादा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसको कैसा चाहिए, थोड़ा सा हॉट वाटर चाहिए। दैट मीन्स हमने मैग्नीशियम यूज किया, वाटर यूज किया एंड देन वी आर गोइंग टू गिव हीट टू दिस वाटर। इस वाटर को थोड़ा सा हम वार्म करते हैं बिकॉज मैग्नीशियम कहाँ पे आ गया, थोड़ा सा मिडल की तरफ आ रहा है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इट विल गेट डिक्रीज, तो इसे वो डिक्रीज हो जाती है। एंड आफ्टर रिएक्टिंग विद द वाटर इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड द फॉर्मूला इज MgOH whole twice प्लस हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। इसके केस में भी सेम चीज होती है इंटरेस्टिंग वाली, दैट हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं दे विल स्टिक टू द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम मेटल एंड मैग्नीशियम मेटल शोज द रैंडम मोशन ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। स्टूडेंट दैट्स ऑल अबाउट द मैग्नीशियम। हमने मैग्नीशियम की तक की बात कर ली है। हाउ आयरन, जिंक एंड एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन they are going to react with the water as they lie in the middle of reactivity series। इनकी reactivity थोड़ी decrease हो जाएगी, so they will not react with the cold water। cold water के साथ तो कोई भी reaction show नहीं करते हैं। they do not react with the hot water also। इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल these metals should be heated। पहले ये मेटल को हमें वार्म करना होगा एंड देन we need to take steam।
स्टीम के साथ ही ये जनरली रिएक्शन करते हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट द रिमेनिंग मेटल्स लाइक lead, copper, silver and gold, they generally do not react even with the steam. ये steam के साथ भी reaction show नहीं करते हैं. So this is all about the reaction of metals with water. If we talk that how non-metals they react with water. So students remember that non-metals they generally do not react with the water. तो यहाँ पे कोई reaction ही नहीं होती है. Though non-metals are reactive with the oxygen. Non-metals में हमने पढ़ा था कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके non-metal oxides का फॉर्मेशन कर रहे थे, but they are not reactive with the water. वो water के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं. And here we are taking example of one non-metal, that is phosphorus. It is phosphorus. Symbol is capital P. So phosphorus is a non-metal, student, and this non-metal is very reactive with oxygen. ये ऑक्सीजन के साथ बहुत ही हाई विग्रस वायलेंट रिएक्शन शो करता है. That is the reason that phosphorus crystals are generally kept stored in the water. इनको जनरली हम वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं, because this phosphorus is a non-metal and it doesn't react with the water. इसकी वाटर से रिएक्शन नहीं होती. ओपन कंटेनर में नहीं रख सकते because ऑक्सीजन से रिएक्शन शो करता है. To keep them, to protect them, they are generally kept in the water. So remember that sodium and potassium, they are kept in the kerosene, immersed in kerosene, and phosphorus is kept in the water to protect from the accidental cases. So that's all about the reaction of metals and non-metals with water. We'll continue our topic in next video. Till then, thanks for watching.